हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जानने के लिए मुझे पहले जानना पड़ेगा एनर्जी लेवल। सो नाउ हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं हाउ एनर्जी लेवल कैन डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ कंडक्टर, insulator and semiconductor. So now during this formation, uh, a concept of energy level was there or energy band was there, and during the discussion of band energy band we had seen that uh, during the transmission of electron from conduction band from valence band to conduction band इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक होल्स भी जनरेट होता है. So now in this video we are just focusing about holes, creation of electron hole pair, and after that we will go for intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, as well as how intrinsic semiconductor can be converted into extrinsic semiconductor, and how many types of extrinsic semiconductor depending upon the process of conversion of intrinsic semiconductor to extrinsic semiconductor we will see in this video. So first of all हम लोग होल पे आते हैं. That is, in previous video also I discussed how holes are basically uh, nothing but absence of electrons. That means if electrons leaves its place, then only होल्स विल बी क्रिएटेड. एंड हर इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँगा कि व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड, लाइक मैं बोलूँगा व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड obviously to a semiconductor. So when energy is supplied to a semiconductor, a valence electron, keep in mind that a valence electron is lifted to a higher energy level, to a higher energy level. The departing electrons, the departing electron leaves a vacancy in the valence band, and and this vacancy is called a hole. So keep in mind that to generate a hole, my electron must be valence electron. That means the electron is ready to move. Next thing is the electron must lifted from lower energy level to higher energy level. That means the electron must move from valence band to conduction band. After this movement, the electron leaves a vacancy in the valence band, and this vacancy is called a hole. So during the conduction, what will happen in the conduction band? There will be valence electron, and in the valence band there will be holes. This is during conduction. During conduction, and before conduction, what we have seen that
The conduction band is obviously full of holes, that is vacancy is there, and valence band full of valence electron, that is before the conduction, before the conduction. So keep in mind that before the conduction, holes are mainly situated at conduction. And since there is no electron, so absence of electron generates holes. So I can say conduction band is full of holes and valence band is full of valence electron. And during the conduction, conduction band becomes full of valence electron, and valence band is the storage of holes. So now uh, I can say if electron moves, then only holes created, or electron will moves if holes will be there in higher energy लेवल. सो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि क्लास में हम लोग जब बैठते हैं, अगर मेरे पास वैकेंट बेंचेस नहीं रहा, वैकेंट चेयर्स नहीं रहा, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट मूव टू दैट क्लासरूम. Again, if I am moving out from the classroom, then a holes will be created. अगर मैं वहां पे सीट ऑक्यूपाई करके ही रखता हूँ, मैं मूव नहीं करता, तो obviously valence vacancy will not be generated. So that means if electron will not move, holes will not be created. Electron will move, then only holes will be created. As well as if holes are available, then only electrons will move. So that means मैं यहाँ पे एक relation establishment कर सकता हूँ between electrons and holes, and this is known as electron hole pair. Electron hole pair. So in this case मैं कह सकता हूँ कि hole will be generated if electron will be moved, or electron will be moved if there is some hole. So that means it is denoted by EH pair, electron hole pair. So all the conduction, I can say in the above image, if you can see, sorry, in the last video. So okay, no issue. I am making this. So this is conduction band. This is valence band. So if electron will move to this particular hole, then it will shift it to this, and that hole will shift it to that part. So during this conduction, uh, electron hole pair will be generated, and due to this creation of electron and hole pair, my current will be conducted through the semiconductor. So now this combination, this combination is nothing but known as recombination. 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 See, why the term re is included in this combination? See, as I stated in previous image that before conduction, okay, before conduction, conduction, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फुल ऑफ होल्स और यहाँ पे फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो बिफोर कंडक्शन देखो, यहाँ पे होल्स अवेलेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है. ये दोनों ही अवेलेबल है. कंडक्शन बैंड में तुम्हारा होल्स है,
वैलेंस बैंड में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, बट मैं बाहर से सोर्स नहीं दे रहा हूँ, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स नहीं दे रहा हूँ, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गेटिंग एक्साइटेड एंड एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कांट मूव फ्रॉम lower energy band to higher energy level. So in this case combination also there, that means number of holes जितना है उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके। लेकिन यहाँ पे कोई करंट कंडक्शन नहीं है। अगेन अगर मैं यहाँ पे बाहर से एनर्जी दे रहा हूँ, सोर्स दे रहा हूँ, तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो देखो ये होल क्या कर रहा है, मूव कर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव करके ये होल के जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप करके इसको ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जंप करके ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली एक होल क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंस है। सो यहाँ पे ड्यू टू दिस ड्यूरिंग कंडक्शन, सो ड्यू टू दिस कंडक्शन ऑफ करंट, मैं देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, तो पहले भी था लेकिन अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा ड्यूरिंग दिस कॉम्बिनेशन करंट कैन बी कंडक्टेड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस, merging of free electron and hole is known as recombination. So यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस मार्जिन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा क्लोजली व्यू करेंगे। लाइक अगर मैं कह रहा हूँ कंडक्शन बैंड पे जो मेरा होल्स है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा है, सपोज तुम एक रूम में घुस रहे हो, वहां पे एक खाली कुर्सी पड़ा हो, तो क्या होगा, तुम जाके उस कुर्सी पे बैठ जाओगे, है ना, आप लोग वहां पे जाके कुर्सी पे बैठ जाओगे। तो जैसे ही आप लोग उस कुर्सी पे जाके बैठ के, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ जो खालीपन था उस कुर्सी का वो डिसअपियर हो गया, जैसे ही आप लोग उस कुर्सी पे जाके बैठ गए। तो रिकॉम्बिनेशन के टाइम में भी मैं ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ और कह सकता हूँ, होल्स कैन नॉट मूव एनीवेयर, rather than it will disappear disappear while recombination is there. This is the main concept behind recombination, creation of electron hole pair and holes. Now मैं आता हूँ अब मेन जो जिस टॉपिक के चलते मेरा इतना सारा डिस्कशन हुआ, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर एंड impure semiconductor semiconductor So
pure semiconductor and impure semiconductor. So pure and impure, basic two concepts are here. So what do you mean by pure? That means no mixing. Impure, some mixing is there. ठीक ठीक है. तो now whenever pure semiconductor means naturally जो semiconductor हम लोग को नेचर से मिलता है that is pure semiconductor, that is सिलिकॉन जर्मेनियम. सो हम लोग सिलिकॉन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. क्यों सिलिकॉन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, दे रहे हैं, बिकॉज सिलिकॉन इज द बेसिक वन. ओके. नाउ इन लेटर हम लोग पढ़ेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी किसको हम लोग मोस्ट सुइटेबली या बेस्ट कंसीडर करेंगे. सो नाउ वी आर कंसीडरिंग सिलिकॉन. सिलिकॉन तो प्योर सेमीकंडक्टर, टाइटल दे दे रहा हूँ, प्योर सेमीकंडक्टर conductor. So now if we will see the internal atomic bonding of silicon, that is silicon has 4 electrons in its outermost shell, that is given in the dotted. So this is only one silicon atom, but bunch of silicons are there. So these silicons atoms are associated with each other like this. Same, this is same. So this electron, changing the color, so this electron will pair with the outermost electron and it is known as electron-electron pair. Next silicon atom, it will pair with next silicon atom. So this is the basic structure of silicon. So we see that in that case there is no option to add or to remove the electrons from the silicon. So this is, I can say, this is found in the purest form. So that's why it is known as pure semiconductor. And technically pure semiconductor is also known as intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Keep it mind, intrinsic semiconductor. If a question will ask about intrinsic semiconductor, that intrinsic semiconductor is nothing but the pure semiconductor. So whenever we will give the definition of intrinsic semiconductor, I can say an extremely pure semiconductor is called intrinsic sorry, intrinsic semiconductor. So I can say it is found in nature naturally. ठीक है. So pure semiconductor को लेके मेरा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. Now प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मुझे थोड़ा सा अगर मैं इम्प्यूरिटी ऐड कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं मिक्सिंग कर दूं तो क्या होगा. तो इफ आई विल मिक्सिंग ऑफ impurity sorry mixing of impurity atom with intrinsic semiconductor will produce impure semiconductor, or I can say it is also known as extrinsic semiconductor. So we will now see what do you mean by the extrinsic semiconductor, because
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्योर फॉर्म में मिलता है नेचर में एज इट इज, हम लोग उसको एज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ मिक्स करूँ थोड़ा इम्प्योरिटी, तो क्या होगा, इट विल जनरेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ देयर आर सेवरल प्रोसेस टू mix impurity to the pure semiconductor, and this process is known as doping। हम लोग देख जानते हैं डोपिंग का मतलब क्या है, adding some substance from the outside, that is doping, dope। whenever I inject or I take electrons, और whenever मैं अगर किसी चीज के साथ कुछ को मिक्स करूंगा या वहां से उठा लूं उस चीज, तो उसको हम लोग कहेंगे डोपिंग। सो नाउ डोपिंग के चलते मेरा क्या क्रिएट हो रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैं कह सकता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे मेरा डोपिंग हो रहा है, प्रोड्यूस करता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो नाउ ये जो प्रोसेस है, इससे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो due to this doping, an impure semiconductor can be converted into due to this doping, an intrinsic semiconductor can be converted to extrinsic semiconductor। Now यहाँ पे मैं दो प्रोसेस फॉलो करूंगा, यहाँ पे मैं दो प्रोसेस फॉलो करूंगा। फर्स्ट वन, मैं पेंटावैलेंट मटेरियल यूज करूंगा, पेंटावैलेंट मटेरियल यूज करूंगा, जिसके अंडर आ रहा है मेरा आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक है। और मैं, और एक प्रोसेस है ट्राईवैलेंट मटेरियल यूज करूंगा, जिसके अंदर आ रहा है गैलियम, बिस्मथ, इंडियम, ठीक है। तो मैं गैलियम को ले लूंगा। तो पेंटावैलेंट मीन्स that is 5 electrons in outermost cell. Trivalent means 3 electrons in outermost cell. Now we will see what happened if I am adding a pentavalent material or I am adding a trivalent material to an intrinsic semiconductor. So first of all I am using pentavalent pentavalent material. Let's say I'm adding arsenic. Sorry. So now see what happened. So as I told, this material can be mixed with the silicon. So now I know about the pure form of the silicon. This one, pure form of the silicon. So now this will create a internal electron pair. Electron pair, and arsenic, as I taken, is a pentavalent. That means it has 5 electrons. So whenever I am going to mix that arsenic into this silicon, then what will happen? It will arrange itself like this. Suppose here silicon is there, silicon, arsenic.
silicon, silicon, silicon. So it will electron-electron pair, it will electron-electron pair. Silicon has 4 इलेक्ट्रॉन्स. अभी मैं आर्सेनिक के साथ इसको कॉम्बाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. Parallelly, you have to do it on your notebook. Parallelly, make this diagram by yourself so the concept will be more clear to you. से सिलिकॉन एटम के साथ ये कॉम्बिनेशन कर रहा है. So now see the band is created. यहाँ पे also, here also two electrons are there. Okay. So now यहाँ पे आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. सो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको मिक्स करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो पेयर क्रिएट होगा, दैट इज सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयर क्रिएट हो गया, ये बाहर की तरफ जाएगा. सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयर हो गया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो गया. तो देखो आसपास और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको पेयर करे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर करे, इसके लिए बाहर इसका और कोई अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है नहीं. सो सिंस ये इलेक्ट्रॉन है नहीं, सो मैं कह सकता हूँ दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री. तो ऑब्वियसली इसका टेंडेंसी होगा कि स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को छोड़ के ये बाहर निकल आए. तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज कर पाएगा इजीली. तो इसको हम क्या कहते हैं, मेरे पास अगर कुछ एक्सेस चीज रह गया है और मैं अगर उसको दे दे रहा हूँ बाहर, ठीक है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, डोनेट. तो ये क्या करता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है ये क्या होगा, it will be donated, and this entire semiconductor is known as donor. और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. So I can say due to mixing of or due to doping of pentavalent pentavalent material, इसके चलते मेरा जो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जनरेट हो रहा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग कह सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. और हम लोग और भी एक टर्म यूज कर सकते हैं, डोनर टाइप semiconductor. Excess electron, 5 electron, 4 electrons are merged with silicon atom and one remains excess. So one electrons can be given to other. So that's why it is known as donor. Since one electron is excess, that means it is negatively charged, and due to this negative charge I can say this is nothing but an n type semiconductor. So keep in mind that pentavalent material, if pentavalent material is doped, n type semiconductor or donor type semiconductor will be generated. Okay, next thing is now come to
trivalent. Now is trivalent. So trivalent material, and say we are taking gallium. Gallium. So that means gallium has three free electrons in its outermost shell. So obviously, whenever we are going to mix this with our silicon structure, that is silicon structure, that is silicon structure, that is silicon structure, and whenever we are going to mix that gallium with silicon structure, then it will looks like silicon, and here there is a gallium silicon. So silicon atom we know that, पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा पॉइंट पे. तो see this part, this unit 1 is very much basic concept of physics based. So if you have clear concept of physics, obviously this part is nothing to you. Okay, and this is gallium. Let it, yeah, three electrons. So now we are creating the bond between silicon. This will create the bond. Electron-electron pairs will be generated. That will be mm, combined with next silicon atom. Okay. Now, see, if this electron is combined with the outermost electron of gallium atom, and see here this electron, here is no electrons to be combined and create electron-electron pair. So I can say in this place there is a hole will be generated, and electrons pair, to provide electrons pair, I need an electron from outside. I need an electron from the outside, so that electron-electron pair will be there. So यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक खाली जगह है, तो मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ. There's a place to accept the electron from the outside. So अगर मैं, मेरे पास खाली जगह है और मैं उस जगह को भरने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले सकता हूँ, so obviously I can be termed as acceptor. And another thing is, whenever electron is required to create the electron electron bond, so that means obviously बाहर का electron कहाँ जाएगा, obviously electron will be attracted by the positive charge. तो दैट मीन्स मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसीलिए ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. तो ड्यू टू दिस
my positive type semiconductor will be generated, and which is also known as p-type semiconductor. P-type semiconductor. So here again we can say, due to the doping of trivalent material to the intrinsic semiconductor, trivalent material to the intrinsic semiconductor, मेरा p-type semiconductor will be created, or I can say acceptor acceptor type semiconductor will be created. So this one is acceptor, that is combined with trivalent or mixing with trivalent material. If intrinsic semiconductor is doped with trivalent material, acceptor will be generated, acceptor will be there. And if pentavalent material will be doped to the intrinsic semiconductor, then donor type semiconductor will be there. Okay, so this is the basic concept of pure semiconductor and impure one. So before ending the entire uh, pure and impure semiconductor concept, one more thing is we have to establish some mathematical expression on the basis of which our operation will be done. That means ये तो हो गया थ्योरी पार्ट. नाउ अब मैं मैथमेटिकल पार्ट में आता हूँ. लाइक मैथमेटिकल पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. तो ये क्या होता है? दैट इज, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको अगर मेरा सेमीकंडक्टर सेटिस्फाई करेगा, देन ओनली आई कैन से दैट सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट गुड टाइप ऑफ करंट. ओके. तो यहाँ पे क्या है, दैट इज कंडक्टिविटी. सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी दो टाइप का होता है. एक है, प्रीवियसली देखे, जब मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हो रहा है, देन द कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. और जब मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हो रहा है, देन माय कंडक्टिविटी विल बी ड्यू टू होल्स. सो नाउ अगर मैं कंडक्टिविटी इक्वेशन को एस्टेब्लिश करूंगा, नॉर्मल इक्वेशन, तो मेरा दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिजाइन करेंगे? सिग्मा एन इक्वल टू कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? दैट इज जे एन, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके. Jn, which is also known as current density due to electron, by that is electric field. ठीक है, तो ये है मेरा बेसिक कंडक्टिविटी का इक्वेशन. अगर इसको हम थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, तो दिस कंडक्टिविटी इज जनरेटेड ड्यू टू charge of an electron, or I can say current density can be defined as the product of charge of electron, density of the free electron, and Vn, that means speed of the electron. ठीक है, स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने तेज है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दैट इज डेंसिटी बाय ई. सो ये हो गया मेरा कंडक्टिविटी ड्यू टू semiconductor, due to electrons. Now second one is conductivity
of semiconductor due to holes. So आप ही लोग बोलो क्या क्या होगा. Just n is replaced by p, that is jp by e, which is known as en, sorry, en, en vp by e. This one is the conductivity of semiconductor due to holes. Now it can be also simplified by uh, uh, converting few terms like Vn by E, V by E. Velocity of movement of the speed of the movement of electron by electric field can be denoted by mu, and mu is the mobility of free electron and holes. So whenever it is for due to electron, that is Vn by E, that means mobility of free electrons, that is denoted by mu n, and Vp by E, that is denoted by mu p, that is mobility of free holes or mobility of holes, I can say. Okay. So now if I will combine these two, or I will replace this mu n by this Vn by E, we'll get from equation 1. Equation 1. What we will get? Sigma n equal to En mu n, and equation 2, that is sigma p equal to En mu p. Okay. And we all know that end of the day all semiconductor are neutral. So I can say if I am combining sigma n and sigma p, that means पॉजिटिव एक है और एक के पास नेगेटिव ज्यादा है, एक के पास पॉजिटिव ज्यादा है, दोनों को कंबाइन कर लो, ऑब्वियसली इट विल गेट न्यूट्रल. So En mu n plus En mu p, so it will gives you En mu n plus mu p. So इसको हम क्या कह सकते हैं? मेरे पास एक मेरे पास ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक जगह पे मेरे पास खाली जगह है, तो मैं अगर दोनों को कंबाइन कर दूं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो खाली जगह पे जाकर बैठ जाएगा. एंड इफ देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आउटसाइड द outer most cell or in the material, then obviously it can say is the initial stage. That means I can consider is equivalent to pure form, that is conductivity of impure semiconductor is En mu n plus mu p. This is the equation for conductivity of intrinsic semiconductor. Conductivity of intrinsic semiconductor. And whenever they will ask in university, they will ask the conductivity of your uh, uh, extrinsic semiconductor, we have to write two equations. So conductivity of extrinsic semiconductor, I have to write mu n equal to En mu n, sorry, sigma n equal to En mu n, and sigma p equal to En mu p. So these two equation I have to write whenever the question will ask about conductivity of extrinsic semiconductor. Okay, so that much for today.
that much for this video. In next video we will discuss about सिलिकॉन वर्सेस जर्मनियम, बिकॉज जैसे ही मेरे पास दो चॉइस है, मुझे एक बेस्ट को चूज करना है, तो सिलिकॉन और जर्मनियम के बीच में मैं कौन से सेमीकंडक्टर को एज अ बेस्ट सेमीकंडक्टर चूज करूंगा, एज वेल एज some mathematical parts, और along with that मैं क्या करूंगा, डायोड पोर्शन स्टार्ट कर दूंगा. ओके, so that much for today. Okay, if you have any queries, you can write your query in the comment box section. Okay, thank you all.